It's around 9 a.m. in the morning and I just woke up. I know it's not the healthiest to take the phone just after waking up, but क्या करें अभी कोरोना में लॉकडाउन एंड यही आदत हो गया है. उठ के कुछ देर फ़ोन चलाते हैं एंड देन जस्ट आई सी यू सून. Hey guys, good morning. I just woke up now. Come on, let's go. पहले ब्रश कर लेंगे, देन फेस धो के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं. चलो. फेस धो लेते हैं. So I'm done. द फर्स्ट थिंग, पहले तो बहुत कुछ फर्स्ट थिंग हो गया बट अभी फ्रेश होके आए. अभी सबसे पहले पानी पियेंगे थोड़ा. Okay, so I have a bowl of watermelon. अभी just I had a small bowl of dry fruits and बस अभी ज़्यादा भूख तो नहीं है, so I'll be having this watermelons. Okay, so I made my bed and I took a shower. Now I am doing my morning skincare routine.
Important moisturize and essence. Bowing, just nicely apply some serum. Good to go. Okay, so as you can see, I am here all set for my online classes. I'm all set. I will just start off with my day. Here, ready. So see you soon after the classes. Okay, so my class is over and I came outside. I came just to have a walk. तो चलो थोड़ा सा टहलते हैं. Just roaming around here, just seeing outside. You know, it's beautiful. See, अभी तो बाहर जा नहीं सकते, but this gives some सुकून. Okay, that's my nani. So just trying to get some fresh air, roaming around. Come and walk with me. Okay, so after the walk I came and lied down for a while and I am thinking of now coloring. मतलब क्या मन किया मेरे को, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ पेंटिंग फॉर अ वाइल. एक्चुअली हम लोग का एक झूला है जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका. वी आर जस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट. सो नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ कलरिंग इट. सो चलो लेट्स पेंट इट. Very dark, salty, but I have completed. जब झूला रेडी हो जाएगा पक्का से दिखाएंगे. अभी बस कलरिंग कंप्लीट हुआ. इट्स ऑलमोस्ट 8 नाउ, इसलिए बहुत डार्क हो गया है. सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव कंप्लीटेड. हो गया फाइनली खत्म. वेरी वेरी हैप्पी दैट आई फाइनली कुड कंप्लीट इट. रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही अच्छा हुआ. बट आई ऑलमोस्ट टुक 2.5 to 3 hours एंड बाप रे आई एम सो टायर्ड. इतना गर्मी है बाहर. आई एम वेरी टायर्ड. आके बस आई लाइट डाउन. कुछ देर बाद डिनर करेंगे. अभी तो जस्ट स्लीपिंग. इट्स टू हॉट. Now the most favorite time, having my dinner. Mango, बहुत सारा mango डाल दिया and having cornflakes. Now it's around 9:30, dinner completed and I'm sitting with my diary and बस अभी थोड़ा journaling करेंगे. I have a very cute origami here given by my friend. It's very cute. It's a bookmark. See? Okay, so I will be, what I was saying, I will be just
writing my to-do list for the next day and journaling a bit. Then seeing you soon. Okay, so I was just journaling and I thought why not sharing with you guys something. See, these days what's going on all around, we need to stay motivated. It's really very important in this पैंडमिक सिचुएशन. अब इतना डीमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं, दिन भर अगर कुछ भी ना करें तब तो द डे विल ऑल सीम मोर वेस्टेड एंड ऑल. इससे अच्छा आई थॉट ऑफ आई एवरी डे ट्राई टू मेक अ टू डू लिस्ट फॉर माई सेल्फ. आई पुट इट अप हियर इन दिस and I just clip it, and that helps me to at least do something productive so that by the end of the day I don't feel miserable कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया, ऐसे ही another day बीत गया. तो at least थोड़ा कुछ productive हो. That's why to-do list is important. And one more thing, you guys can definitely try out journaling. It really helps. I have been trying for last 2-3 months and it's really helpful. So you can comment down below if you want to know how I make my own DIY journals, giving a personalized touch to them. You can really leave down a comment and I'll let you know. After journaling, I went to the terrace with my parents, just sat with them for a while, and now I am in my bed. Finally, it's around 10:30 and I'll just be binge watching and go to sleep. बस थोड़ा कुछ यूट्यूब चलाएंगे, कुछ देखते देखते I'll be sleeping. So good night, bye bye, take care.